Welcome to Ada 247 OPSC YouTube class Polity SK Raut here. So plan आज हमरो जो 2025 रो जो जुलाई मासरे जो प्रिलिम्स हबो ता पय हमें किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा मझरे मझरे एमती चलछि मेंस आ प्रिलिम्स मिसा मिसी करी हमें आणुचे तो आज हमें किसी प्रिलिम्स क्वेश्चन देखिए जल्दी आरंभ कर देवा जी एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी प्रोबेबल क्वेश्चंस प्रिलिम्स इंपोर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यूज ओके वी शुड स्टार्ट दैट आशा करूची भलरे थिबो समस्ते चंगा थिबो नै कि इंपोर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस एमसीक्यूज just an inspiring quote if you want to change the world be that change महात्मा गांधी बेले बेले कोटेशन भी पढ़े बेले बेले कोटेशन पढ़े एक्सपेंशन ऑफ आइडिया रे पढ़े एसे भी पढ़े तो ये गोटे बहुत लॉन्ग कॉन्सेप्ट पिला माने बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड अगर दुनिया को जदि बदलवा को हमें चाहूँ ताले हमें निजे बदल जीवा दरकार अर्थात सब क्षेत्र में पर्सनल लाइफ रे हो प्रोफेशनल लाइफ रे हो धर आम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कथा कहूचे वी शुड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज वी शुड स्टार्ट प्रोटेक्टिंग ट्रीज वी शुड प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड इम्प्लांट ट्रीज सो खाली कहवाटा बड़ता अर्थ कौन खाली महात्मा गांधी कहते खाली वचन कहीकि आ निजर दोष लुचेबाटा ठीक नहीं आम निजे भी चेंज हवा दरकार समाज को जदि आम बदल चाहूचे तार आम निजे बदल जीवा दरकार अर्थात आमर निजर अप्रोच से अनुसार हवा दरकार सो दैट विल सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स एंड अदर्स विल फॉलो अस तो निजे आगे उदाहरण हेले अन्य माने परिवर्तन करिवे यदि निजे उदाहरण आमे न होई परिबा ताले दुनिया को बदलैबा को देखिबा को ठीक कथा नुहे ठीक है आरंभ करिबा आमे आज तो बोलाने बजेट ऑलरेडी आसी जाईची बजेट रो तो बहुत सारा देखुथिबो हमरो यूट्यूब सेशन में सार माने करूछंती बट फिर भी जो एस्टिमेटेड हेची बजेट रो 3496 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर हबो ए वर्ष 34.96 लाख कोटी टंका एक्सपेंडिचर हबो एवं एंड 50.65 लाख कोन हबो रिसीव्ड हबो एटा रिसीप्ट हम 34 लाख 96 रिसीप्ट हम और खर्च हम 50 लाख 0.65 लाख तो डेफिसिट बजेट अच्छी डेफिसिट बजेट गोटे ग्रोइंग इकोनॉमी पई बहुत फेवरेबल थाए डेफिसिट बजेट रहिबा दरकार बोली कह जाए तो एनीवे बजेट ऊपर आउरी सब क्लास अच्छी हमरो से यूट्यूब रे देखिबो सर मानकर क्लास सब बट दिस इज द फैक्ट टुडे एंड दिस इज द बजेट ऑफ 2025-2026 आउ डी अलग सब आइडिया नियो कौन कौन सब प्रोजेक्ट पूरा बदली कौन कौन सब अप्रोच चेंज होती एथरक टॉय इंडस्ट्री उपर अधिक फोकस अच्छी तो सेगुड़ा देख टे ठीक अच्छे तो आरंभ करवा आज सेशन आम फंडामेंटल राइट्स उपर क्वेश्चंस उपर ठीक अच्छे लुक एट द क्वेश्चंस अच्छा ये तलू पड़े नहीं Consider the following statements. In India, the right of witness to testify freely in court is a fundamental right against under Article 21 of the Constitution. The Malimat Committee report is associated with recommendation of this protection scheme. V.S. Malimat Committee was constituted in 2004. Which of the above are correct? Plan first correct अच्छी कारण इटा right of witness to testify freely in courts is a fundamental right so इटा गोटे फंडामेंटल राइट बोली सुप्रीम कोर्ट केस रे बहुत सारा केस रे कहिछन तो इटा ठीक हबो मालिमत कमिटी इटा भी ठीक अच्छी मालिमत कमिटी रिपोर्ट एसोसिएटेड रिकमेंडेशंस ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम इटा क्रिमिनल लॉ को इन्वेस्टिगेट करा होतला रिव्यू करा मालिमत कमिटी वीएस मालिमत कमिटी 2000 मसीहार आपन देछि एटा भूल अछि 2004 नुह तो माने 1 and 2 करेक्ट हबो ए हबो आंसर ऑप्शन देखा 1 and 2 तो अच्छी तो ऑप्शन करेक्ट अच्छी तो
तो 21 अगेंस्ट रे राइट टू विटनेस जो अच्छी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर जो इनफर्ड राइट्स अच्छी ता भीतर गोटे राइट्स होची राइट्स ऑफ विटनेस टू टेस्टिफाई फ्रीली इन कोर्ट्स इन ए फंडामेंटल राइट साक्षी जे पढ़िबो से तार स्वाधीन भाव में ताकू टेस्टिफाई करियो कोई परिबो अर्थात ता इच्छा अनुसार करिबो ठीक अछि गुड इवनिंग बेटा प्रदीप ठीक अछि नमस्कार ठीक अछि आरंभ करिबा हमें तो इट देछि मु constituted in 2000 panel headed by former chief justice of Kerala and Karnataka justice V.S. Malimath to suggest an overhauling of the century old criminal justice system जोटा हमरो एबे BNS और BNSS एगुरा सब होईची तेनु मालिमत कमिटी रिकमेंडेशन भी बहुत सारा प्रभाव पकेची क्रिमिनल लॉ पर क्रिमिनल लॉ हला हमरो BNS BNSS Question 2 with reference to appropriation bill consider the following elements. It enables the government to withdraw funds from the Consolidated Fund of India. It is mandatory for the government to accept the recommendation of the Rajya Sabha on the appropriation bill. Which of the statement is correct? माने appropriation bills टा budget समय आछे तेनु appropriation bill रे कोनोसी amendment अणा जाए नाही तेनु first statement टा ठीक हबो appropriation bill pass हेले जोटा एबे तुम देखुथिबो appropriation bill pass होला परे गवर्नमेंट बजेट पैसा विड्रॉ करिवो कंसोलिडेटेड फंड रु तेणु सेटा ठीक अच्छी किंतु एटा ठीक नहीं कारण राज्यसभा कहली अप्रोप्रिएशन बिल रे कौन से आमेंडमेंट अणा जाई परिबोनी तेणु राज्यसभा रिकमेंडेशन न मानी पारे कारण एटा कंसोलिडेटेड फंड रु जो विड्रॉल हबो तेणु मनी मैटर रे राज्यसभा पावर नाही तेणु एटा भूल हबो सेति में हमें करिवे कोन ना वन ओनली ठीक है पिलाने तापर क्वेश्चन देखो द फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस जोटा गोटे इनफर्ड राइट्स अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a) अंडर रे 19(1) क्लॉज सब क्लॉज ए अंडर रे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अछि एवं आर गोटे इनफर्ड राइट होची इनफर्ड राइट कहती देखो अर्थात डायरेक्ट इम्प्लिसिट अच्छी एक्सप्लिसिट नहीं इनफर्ड राइट होची फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस टा होची गोटे इनफर्ड राइट गणमाध्यम स्वाधीनता जो आम कहचे संवादपत्र बा टेलीविजन चैनल मानकर जो स्वाधीनता अच्छी आम फ्रीडम ऑफ प्रेस कहचे फ्रीडम ऑफ प्रेस टा गोटे इनफर्ड राइट अर्थात इम्प्लाइड राइट्स डायरेक्ट मेंशन नहीं से जहाँ हो से 19(1)(2) रे अच्छी एवं से रेस्ट्रिक्ट हुए अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 तेणु क्लॉज 2 रे पाखापाखि 8टा ग्राउंड अच्छी एवं से 8टा ग्राउंड रेस्ट्रिक्ट यहाँ हम सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम डिफेमेशन हम इनसाइटमेंट टू ऑफेंस भी हम बाकी अन्य सब अच्छी मोरालिटी पब्लिक ऑर्डर फ्रेंडली रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज एम सब अच्छी पाखापाखि 8टा ग्राउंड अच्छी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्ट करा जाए कलेक्टिव इंटरेस्ट बा देशर यूनिटी इंटीग्रिटी इज वाइटल इंपोर्टेंट तेणु आमर कथबार्ता आमर लेखा लेखी बा आमर जेकोसी एक्सप्रेशन गुरा जदि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को नष्ट कला जदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात कोर्ट विरुद्ध कोर्ट को अवमानना कला एवं डिफेमेशन निंदा जोटा कहती डिफेमेशन गोटे पर्सनल एट्रिब्यूट गुरा इनसाइटमेंट टू ऑफेंस अर्थात कौन सी क्राइम करने प्रोत्साहन देले ताले सेटा फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्ट हे अर्थात सेटा अन्याय तेणु से हम 1 2 3 अर्थात सब जाक करेक्ट अच्छी शेयर कर दियो सब जो माने देखुच ग्रुप रे शेयर कर दियो तो आम यहाँ को देखुचे पिलाने आम आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ठीक अच्छे
ओके नेक्स्ट आसवा में नेक्स्ट क्वेश्चन को The writ of mandamus is available not only against judicial authorities but also against administrative authorities. The writ of prohibition is issued only against judicial and quasi-judicial authorities. Which of the following above are correct? Which of the above are correct? Writ of mandamus जो आर्टिकल 32 आउ आर्टिकल 226 अंडर रे रिट जुरिस्डिक्शन टा गोटे बेसिक स्ट्रक्चर बोली कहै छी बेसिक स्ट्रक्चर बोली कहै छी तेणु दैट इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल बा गोटे फंडामेंटल लॉ गोटे गोटे फंडामेंटल प्रोसीजर कहि परिबा हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रो तेणु सेटा ता अंडर रे जो रिट्स गुरा हाबियस कर्पस मांडामस एगुरा सब इश्यू करा जाए तेणु मांडामस टा समस्त अगेंस्ट आसी परिबो बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडीज लोअर कोर्ट पब्लिक अथॉरिटी जो माने नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी पई सेटा आसे तो सेटा ठीक अच्छे रिट ऑफ प्रोहिबिशन भी जुडिशियल आउ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी अगेंस्ट आसी परिबो तेणु बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हबो सी आर्टिकल 232 अंडर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 अंडर रे हाई कोर्ट्स एटा इश्यू करंती एटा एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पे करा जाय विशेष करी एवं हाई कोर्ट भी अदर पर्पज में यूज करि परिबो रिट जुरिस्डिक्शन टा नालसा सॉरी सेटा एल चंद्रकुमार केस 1997 रे एल चंद्रकुमार केस 1997 ने सुप्रीम कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन को बेसिक स्ट्रक्चर गोटे पार्ट बोली कहितला रिट जुरिस्डिक्शन माध्यम रे फंडामेंटल राइट को एनफोर्समेंट करा जाए ओके ओके सो फंडामेंटल राइट को एनफोर्समेंट करा जाए तेणु रिट जुरिस्डिक्शन टा गोटे बड़ जिनस प्लान रिट जुरिस्डिक्शन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया जाइए ता माने नुह कि अन्य कोर्ट माने करि परिबेनी किंतु पार्लियामेंट जदि चाहिबो तने रिट जुरिस्डिक्शन को अन्य कोर्ट मान को देई पारिबो किंतु एपर्यंत कोनोसी अलगा कोर्ट को दिया जाई नाही Look at the question here. As far as the armed forces are concerned, the rest of fundamental rights guaranteed under Article 14 and 19 of the Constitution. जो Article 33 अच्छी Article 33 under रे restriction अच्छी fundamental rights for certain kinds of persons. Restrictions of fundamental rights for armed forces, paramilitary forces and analogous services, intelligence services मानो पाई जो माने डिफेंस रे अछंती जो माने इंटेलिजेंस सर्विस रे रहउछंती बा पुलिस रे समान पे फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करा जाए कारण डिसिप्लिन मैटर पे करा जाए तेणु सेगुरा आंसर सेगुरा सब नॉर्मल लोकों को जेमती मिले डिफेंस लोकों को सेमती मिले नाही तेणु से जो जिनसटा अच्छी कि फंडामेंटल राइट्स जो 14 अंडर अच्छी राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड 19 रे जो अच्छी 6टा फ्रीडम सेटा आर्म फोर्सेस लोक माने जो अच्छी जो माने डिफेंस लोक एम्प्लॉय माने तांको मिलिबो कि मिलिबनी नॉट अवेलेबल एट ऑल नुह अवेलेबल टू द आर्म फोर्सेस नॉट टू द अदर फोर्सेस एमती भी नुह अवेलेबल ओनली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू द लॉ पार्लियामेंट अनुसार वेरी गुड तो डी हब आंसर वेरी गुड कालिया वेरी गुड यस दैट्स गुड आरंभ करबा में पूर्व देखि नब हमर यूनिकॉर्न बैच मेंस पई ओपीएससी रो मेंस एग्जामिनेशन प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू पई कंप्लीट पैकेज रहउची फाउंडेशन पैकेज जोतरे फाउंडेशन स्ट्रांग करा होची पिलांकर एवं केमती राइटिंग एबिलिटी बढ़िबो केमती से माने भल से बुझी परिबे केमती कैप्चर करि परिबे दैट इज ऑल कवर्ड इन द यूनिकॉर्न बैच इट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड रिसेंटली बहुत जल्द एबे स्टार्ट होईची सो यू कैन जॉइन द बैच नाउ एंड अवेल इट इन द अड्डा स्टोर रे फ्री टेस्ट सीरीज भी रही चार्टा जाक जीएस पेपर मेंस रो
कंपलसरी ओडिया इंग्लिश पेपर अच्छी एवं प्रिलिम रो दुटा जो पेपर भी अच्छी इंटरव्यू गाइडेंस भी 250 मार्क रो जो इंटरव्यू गाइडेंस भी रही ठीक अच्छे एक्सेप्ट ऑप्शनल पेपर्स आरंभ करबा हमें आज गोटे क्वेश्चंस Which of the following statements are true with regard to fundamental rights of the minorities of educational matters? Plan Article 30 under रे educational institution establish और administer करिया पे दे जी दीटा करिया दे जी administer करिवे और establish भी करिवे तो the minority has only the right to administer इटा भूल होबा and minority has the right to establish and administer इटा ठीक होबा Article 30 हमें कहि परिबा right is absolute not subject to any restriction सेटा हमें भूल कहबा कारण सेमती किछि नाही राइट कोनोसी जिंस भी संविधान रे एब्सोल्यूट न जदि पार्लियामेंट चाहिबो बा गवर्नमेंट चाहिबो त रेस्ट्रिक्ट करि परिबो त नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट हो कि के भी हो एब्सोल्यूट माने कोन 100% तो 100% कोनोसी जिंस दिया जाय नाही तेणु रेस्ट्रिक्शन हुए माइनॉरिटी हेले भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी रेस्ट्रिक्शन हम एवं से रेस्ट्रिक्शन गुरा लीगल रेस्ट्रिक्शन बा रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन हवा दरकार तेणु यहाँ भूल हम आउ गोटे स्टेटमेंट बाबा अच्छी आउ गोटे स्टेटमेंट कौन अच्छी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज्ड ऑन द प्रमोट ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट माल एडमिनिस्ट्रेशन तेणु यहाँ ठीक अच्छे तो मैंने आमर कौन हम 2 and 4 हम आंसर बी भलसे देखाओ टिके एटा ठीक है 2 एटा तो भूल अच्छी तो 2 और 4 ठीक है 2 और 4 Which of the following is are correct? The principle of equality before law does not apply on the president and the governor. The enjoy immunities under a law made by parliament. पहले principle of equality before law इटा गवर्नर मान को अप्लाई करा जाए ना अर्थात that does not mean that they are above law but they are highest constitutional dignitaries तेन तांको पे अलग प्रोसीजर रही छी सेति पे तांको डायरेक्टली अरेस्ट करा जाए नी कि डिटेन करा जाए नी कि कोनोसी क्रिमिनल केसेस गुरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तांको अगेंस्ट रे हबनी they are not answerable to any court for their acts for their decisions से माने आसे से माने करो निष्पत्ति पे से माने कोनोसी कोर्ट रे आंसरेबल हेबे नाही एवं से माने अरेस्ट हे परिबन डिटेन हे परिबन एक कथाटा आर्टिकल 361 रे अछि आर्टिकल 361 रे प्लान अछि तेनु कॉन्स्टिट्यूशन रे ऑलरेडी प्रोवाइड करा हाइछि 361 आर्टिकल रे जो पार्ट 21 रे जो अछि 361 रे तेनु सेटा पार्लियामेंट प्रोवाइड करेनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे तेनु एटा भूल हबो तो ये आम कौन करवा आंसर कौन करवा आंसर 1 ओनली डी करवा 361 रे अछि तेन बोथ हबनी 361 रे अछि तेन सेटा कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि द पार्लियामेंट द एंजॉय इम्यूनिटी अंडर ए लॉ बाय मेड बाय पार्लियामेंट नो द एंजॉय इम्यूनिटीज अंडर एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो एटा आंसर डी हबो तापरे किछटा लीडिंग केसेस गुरा अछि किछि लीडिंग केसेस गुरा इंदिरा साहनी केस मिनर्भा मिल केस गोपालन केस शंकरी प्रसाद केस ठीक अछि इंदिरा साहनी केस एरा सब डिफरेंट यदि आंसर दबा तो दे दियो यदि कम जानि छ आंसर दबा था यू कैन गिव द आंसर ओके पिलाने तो इंदिरा साहनी केस टा 1992 मिनर्भा मिल केस 1980 गोपालन केस 1950 और शंकरी प्रसाद केस 1951 इंदिरा साहनी केस पिलाने एटा होची कोन इंदिरा साहनी केस टा रिजर्वेशन केस रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एटा रिजर्वेशन केस को जे जो ओबीसी रिजर्वेशन ऊपर केस टा आइतला मंडल कमिशन जो लागू हेतला 1990 मसीह से केस होता इंदिरा साहनी केस और से सुप्रीम कोर्ट 50% ऊपर रिजर्वेशन जीवन बोली कही से कौन
इंदिरा साहनी केस एवं यही केस रे क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट डेवलप होता क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता जो माने रिजर्वेशन नौथिबे से मानको क्रीमी लेयर जोटा सब कैटेगराइजेशन कहा होची सेटा एठी अप्लाई हितला एवं मिनर्वा मिल केस ता जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी को आलोचना करा हितला एवं दे आर इनसेपरेबल the balance between fundamental rights and DPSP forms the bedrock of the constitution बोली सुप्रीम कोर्ट कहते हैं सही केस रे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जो जुडिशियल रिव्यू को इलीगल डिक्लेयर कराइतला ताकू रिस्टोर करथिला सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल केस रे एवं मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे एटा को जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बोली कहा गला पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तेन रिवाइवल ऑफ जुडिशियल रिव्यू जोटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे अटैक कराइतला एटा गोपालन केसटा होची एस्टैब्लिश्ड बाय रॉ आर्टिकल 21 को डील करथिला एवं एथिरे गोटे नैरोर व्यू नियाइतला कि राइट टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अनुसार जने लोकर जीवन प्रति विपद सृष्टि परिबो तेनु जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थिला कांसेप्ट जोटा मेनका गांधी केस 1978 रे हितला तेनु एके गोपालन केस को चैलेंज रिवर्स कराइतला मेनका गांधी केस तेनु मेनका गांधी केस रे गोटे नैरोर व्यू नियाइतला आर्टिकल 21 रो गोटे नैरोर व्यू नियाइतला सेति पई सेटा ता सहित मैच करिवो एवं आ शंकरी प्रसाद केसटा होची power of parliament to amend the constitution बेली कहैतला parliament can amend any part of the constitution including part 3 बेली कहैतला तो सेटा से धाराटा चलिला गोलोकनाथ पर्यंत गोलोकनाथ केस रे ही रिवर्स करा गला कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करी हबनी कारण दे आर इम्यूटेबल तले एटी आंसर कोन हबो ना ए रहबो ए हबो कोन ए हबो 3 तापरे बी हबो 4 सी हब 2 1 3 4 2 1 देखिबा 3 4 2 1 यस 3 4 2 1 आंसर हब ए आउतर देखि दियो ठीक अछि 3 4 2 1 नेक्स्ट आसीबा Consider the following, look at the sentence, consider the following statements reference to right to equality. Principle of equality before the law does not involve the idea of absolute equality for all. Principle of equal protection of the law empowers the state to classify people for legitimate purposes. Then equality involves the idea of absolute equality. It is bhul hochi kan absolute equality no. The state cannot deny equality on the to any people, any person on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth. अर्थ अन्य ग्राउंड रेस्ट्रिक्ट करी हबो लॉटा केबे एब्सोल्यूट हबोनी कोड ना कोड रेस्ट्रिक्ट हवा को पड़िबो तो एब्सोल्यूटनेस नाही सेटा एवं ए जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जोटा दीटा कांसेप्ट अछि आर्टिकल 14 रे इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वल प्रोटेक्शन माने इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन इक्वल सर्कमस्टांसेस तो सेठी रिजनेबल क्लासिफिकेशन करा जाए कैटेगराइज करा जाए दर इनकम ग्रुप गवर्नमेंट सर्वेंट नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट वुमेन ए सब दर क्लासिफिकेशन करा जाए तो क्लास बेस्ड लेजिस्लेशन हेई परिबो अर्थात गोटे निर्दिष्ट श्रेणी पे नियम तैयारी परिबो तो एटा ठीक अछि only 2 is the answer C. Which of the following are related to, which of the following are included in the definition of state under Article 12 of the Indian Constitution? जो 12 रे जो definition of state अच्छी पार्ट 3 रे जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट अछि से स्टेट कहा को कुआ जीवो बस से स्टेट ता कहा अंडर रे आसीबो से स्टेट ता कोन अंडर रे आसीबो बा ता अंडर रे को माने आसे समस्त आसीबे जो माने भी सरकारी संस्था जो माने सरकारी काम करूछंती बा गवर्नमेंट गवर्नेंस काम रे जो माने भी अछंती
पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इवन प्राइवेट बॉडी जदि गवर्नमेंट रो काम करथिबो, जदि स्टेट रो काम करथिबो ताले सी भी स्टेट अंडर आसीबो, अर्थात सी कोनोसी काम करिवोनी जोटा फंडामेंटल राइट वायोलेशन हबो। तो एटा लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट हबो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हबो, कटक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हबो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी हबो। 1 2 3 4 डी स्टेट कवर्स एवरीथिंग व्हिच परफॉर्म्स द टास्क ऑफ ए स्टेट। जो राष्ट्र काम जे भी करिवो से स्टेट अंडर रे आसीबो। ठीक अछि, आरंभ करिवा हमें। नेक्स्ट, which of the following provisions of the Constitution of India are associated with affirmative action? Affirmative action माने जो for protection of the interest of the disadvantageous section of the backward classes मानकर सेटा कोनती affirmative action। तेणु एथिरे कहूँ affirmative action कौथरे निया जाउची, आर्टिकल 15 रे affirmative action अच्छी, 15(3) रे, 15(4) रे एरा सब अच्छी कि state will take special provisions for women and children and for the promotion of the backward classes, educational and economic interest of the backward classes अच्छी 15(4) रे, एवं बहुत सारा जिनस रही। तेणु 15 टा affirmative action, 16 भी affirmative action, जदियो इक्वालिटी अच्छी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे तथापि बैकवर्ड क्लास मान पई राष्ट्र रिजर्वेशन व्यवस्था करिवो एवं अन्यान्य व्यवस्था रही। तेणु 15 और 16 affirmative action रिलेटेड अछंती, 21 रे सेमति किछि नाही। तेणु ओनली 1 and 2 ओनली हबो, ए हबो। affirmative action माने empowerment of the weaker section for development of the backward classes। तेणु एटा सेतिरे अछि कोतरे 15 रे और 16 रे भी अछि, रिजर्वेशन अछि 15 रे 16 रे। ऑप्शन गुडा लुचि जाय, तब देखिए which of the following provisions of the constitution of India have a bearing on health। हेल्थ उपरे कार bearing अर्थात कोथरे हेल्थ रिलेटेड प्रोविजन अछि, कोथरे हेल्थ रिलेटेड प्रोविजन अछि। एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? नीलाद्री, यस, ओके ओके ओके। तो कोटा एटा आंसर हे परिबो? ठीक अछि, हम कहि दूची किछि। तो 10 शेड्यूल पिलाने एंटी डिफेक्शन लॉ अछि, तेणु एटा हेल्थ रिलेटेड किछि नाही। एटा एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर 11 शेड्यूल रे 243 जी रे अछि, 243 जी रे अछि हेल्थ। जो 11 शेड्यूल जो 243 जी रे अछि, तेणु से हेल्थ अच्छी, प्राइमरी हेल्थ पंचायत मानकर रेस्पॉन्सिबिलिटी। डीपीएसपी रे तो बहुत सारा जगह अच्छी, 39 ई रे अच्छी, आउ 39 42 रे अच्छी, 47 रे अच्छी, एरा सब आर्टिकल रे अच्छी कौन हेल्थ ऊपर अच्छी। तो सेटा रिलेटेड हम फंडामेंटल ड्यूटीज रे सेमती हेल्थ ऊपर किछि नै, फंडामेंटल राइट्स रे अच्छी, राइट टू 21 अंडर आसीबे, राइट टू हेल्थ और एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज एगुरा गोटे फंडामेंटल राइट बोली सुप्रीम कोर्ट कहते। तेणु सेटा 21 रे भी आसीबो। तेणु फंडामेंटल राइट्स आसीबो, आउ 11 शेड्यूल आसीबो, आउ डीपीएसपी हेल्थ ऊपर बियरिंग अच्छी, अर्थात हेल्थ ऊपर प्रोविजन सेतिरे रहिछि। तेणु एटा कौन हम 2 3 5 हम, 2 3 5 हम, सी हम आंसर, 2 3 और 5 आंसर हम। With reference to the writs issued by the courts in India, consider the following statements. Mandamus will not lie against private organization unless it is entrusted with a public duty. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Any public-minded person can a petitioner to move the court to obtain the writ of quorum. Quorum टा public office usurpation बा जो इलीगल ऑक्युपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, जदि सरकारी पद पदवी रे कई जने माने अयोग्य व्यक्ति बा कोनोसी व्यक्ति रही जो जो माने भाबुचंती कि से फिट नो, ताले कोनोसी भी लोक रिट पाई अप्लाई करि परिबो। तने एटा ठीक हबो, एटा भूल हबो, कारण मांडामस गवर्नमेंट कंपनी अगेंस्ट रे आसीबो जदि, कारण सेटा जदि कोनोसी नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी कला, सेटा पब्लिक कॉर्पोरेशन पब्लिक अथॉरिटीज अगेंस्ट रे आसे, तेनु गवर्नमेंट कंपनी माने आसीबो।
এইটা ভুল এইটা ঠিক হব কারণ যদি যদি পব্লিক কୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ସରକାରୀ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମାଣ୍ଡାମସ୍ ଆସିପାରିବ ଆଉ ଯଦି ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆସିବନି ସେ କହୁଛି ଅନଲେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1 and 3 1 and 3 ଆନ୍ସର୍ ହେବ 1 and 3 yes C କରେକ୍ଟ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ठीक है look at the question therefore under the Indian Constitution concentration of wealth violates concentration of wealth टा कहा को violate करूची fundamental right to equality को violate करूची ना DPSP को violate करूची ना right to freedom को violate करूची ना the concept of welfare को violate करूची concept of welfare constitution रो बा गोटे किछि सेमती ये नहीं तो थैंक यू नमिता थैंक यू वेरी मच ओके सो जो concentration of wealth plan अच्छी 39C रे अच्छी the state shall make measures to prevent concentration of wealth जो rich और poor जो gap आम देश रे अच्छी धनी गरीब मध्य जो प्रभेद अच्छी थिला सेटा को डिक्रीज करिया पई बा ताको डिमिनिश करिया पई स्टेप निया जाउची तमे देखुथिबो हमर प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर अछि इनकम टैक्स सब एग्जेम्पशन अछि एथर को बजेट रे 7 लाख ना केते अछि 12 लाख पर्यंत एग्जेम्पशन बदे अछि सरकार कर तेनु जो माने लोअर इनकम ग्रुप ताको प्रोटेक्शन दिया होची ताको कम टैक्स निया होची जो माने हायर इनकम ग्रुप ताको अधिक टैक्स निया होची सेमती पुअर लोक मान को सब्सिडी दिया होची एवं बहुत सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाउची जेमती हमें सुभद्रा योजना कहबा ये करबा एगुरा सब दिया होची तेनु सेटा कहउछंती डिकनसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कारण जो रिच और गरीब मध्य रे जो रिच और पुअर मध्य रे जो थिला तेनु इटा आर्टिकल 39C हेले कोठा हो डीपीएसपी हो तेणु आंसर बी हो तो माने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायोलेट्स डीपीएसपी कारण डीपीएसपी रो को आर्टिकल को वायोलेट करछि 39C टा होछि गोटे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो डीपीएसपी जो तीन प्रकार रो अछि समाजवादी नीति गांधीवादी नीति और उदारवादी नीति जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल लिबरल प्रिंसिपल तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल रे 39C अंडर रे अछि कि जदि सरकार बा राष्ट्र कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ विरुद्ध रे स्टेप नब डिकनसेंट्रेशन करिवो अर्थात धनी धनी हे जिवे गरीब गरीब हे जिवे ताल तो सही कथा हे जिवो सही इनइक्वालिटी आसीबो तेनु आगुरु स्वाधीनता पूर्व जो इनइक्वालिटी थिला जो असमानता थिला सेटा को दूरीकरण पाई तो आम सब व्यवस्था कले डेमोक्रेसी आनिले एवं विभिन्न प्रकार डीपीएसपी को रखाला डीपीएसपी रखिबार कारण कोन सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज गुरा को धीरे धीरे दूरी देकी समाज रे गोटे साम्यवादी समाज गठन हो जो धनी रहिबे किंतु गरीब रहिबेनी बा समस्तंकर किछिटा इनकम पोटेंशियल रहिबो किछिटा इनकम रहिबो एवं से माने प्रोटेक्टेड हेबे सेति पई गरीब लोक मानन को प्रोटेक्ट करिया पई बा बैकवर्ड क्लास लोक को प्रोटेक्ट करिया पई सरकार विभिन्न प्रकार योजना करछंती एवं इनकम टैक्स जो अच्छी हमर डायरेक्ट टैक्स गुरा सेगुरा सब प्रोग्रेसिव इन नेचर अच्छी कारण सेगुरा अधिक रु अधिक इनकम कले अधिक टैक्स देवा पड़ो जिते कम इनकम हम से कम टैक्स देवा पड़ो सो दैट इज हाउ द डिकनसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज रियलाइज्ड ठीक अच्छे तो सेटा आंसर बी हम यहाँ डिकनसेंट्रेशन एवं को आर्टिकल वायोलेट हम 39C वायोलेट हम नेक्स्ट एग्जांपल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग Indian polity is an essential feature that indicates that it is a federal in character आ भीतर को प्रोविजन टा भारत को गोटे फेडरल भारत को गोटे फेडरल कंट्री भाव में परिचित करूँ पे फेडरल कंट्री रो मेजर जिनस हूँ डिविजन ऑफ पावर आउ डिविजन ऑफ पावर्स टा मेन जिनस तापर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी रहिले
ही फेडरल डिस्प्यूट गुरा समाधान करि परिबो सेति इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो ऑप्शन टा एथरे हमर अछि देखि परथिबो द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी सिक्योर तेनो इटा ठीक हबो बाकी गुरा एते इंपोर्टेंट नो बाकी गुरा फेडरल प्रोविजन इटा फ्रीडम प्रोविजन हेई पारे यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जेंति राज्यसभा रे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मानकर रिप्रेजेंटेशन अछि स्टेट मानकर रिप्रेजेंटेशन अछि किंतु सेटा एते स्ट्रांग रीजन नो फेडरेशन पाई यूनियन कैबिनेट कैन हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज सेटा अलग कथा सेटा वाइडर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी रे सेटा गोटे फीचर्स किंतु सेटा फेडरल फीचर्स नो फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ सेटा यूनिटरी कंट्री भी रही परिबो फेडरल कंट्री भी रही परिबो तनो फेडरल कंट्री रे सेटा जीवनी तनो आम पई गोटे ऑप्शन सुइटेबल अछि बा करेक्ट अछि सेटा होछि ए दैट इज ए इज द आंसर ओके नेक्स्ट है हमरा नेक्स्ट आसीबा में 16 नंबर which one of the following statement is not correct secularism is core part of the constitution of India as declared in the Supreme Court recently it was declared as a part of basic structure of the constitution in Kesavananda Bharati case fundamental rights in part 3 contain secular provisions in part IV of the constitution there is no hints about secularism there is hints part IV रे article 44 रे uniform civil code अछि यूनिफॉर्म सिविल कोड टा होची गोटे सेक्युलर प्रोविजन्स से जो प्रोविजन टा से जो सेक्युलर प्रोविजन्स टे यूनिफॉर्म सिविल कोड टा ही से हमर कण सेक्युलर प्रोविजन्स कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड रहिले पर्सनल लॉ जो रिलीजियस लॉ गुरा अछि पर्सनल लॉ गुरा अछि से गुरा को अबोलिश कर दिए जदियो हम देश रे यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टाब्लिश हेइनी सारा देश रे हेइनी किंतु एबे उत्तराखंड करिछि बेल तुमे जानिथिबो एवं पिलाने एटा भी जानिथिबो कि गोवा होछि फर्स्ट स्टेट माने बिफोर इंडिपेंडेंस टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड एवं आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड but across the country there is no uniform civil code it is very impossible to implement uniform civil code in the country because there is a religious freedom of conscience रही तेणु यूनिफॉर्म सिविल कोड कले फ्रीडम ऑफ conscience और रिलीजियस फ्रीडम जो 25 रे अच्छी से सब भायोलेट हो पारे से डिबेटेबल अच्छी कॉन्सेप्टा वेदर भारत रे यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो पारिबो कि न हो पारिबो ता ऊपर तर्क वितर्क जारी रही ठीक अच्छे तो यहाँ आंसर हम यहाँ आंसर आम करवा डी केशवानंद भारती केस पर भी बहुत सारा केस रे सेक्युलरिज्म को एसआर बोमाई केस रे कुहाई तेणु गोटे कॉन्सेप्ट को विभिन्न जगह बेसिक स्ट्रक्चर बोली सुप्रीम कोर्ट कहते केशवानंद भारती केस रे भी कहते तेणु से ठीक अच्छे तेणु आंसर ये डी हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग would you accept as the most appropriate definition of liberty कोटा आबित्रु absolute liberty is absence of restraint liberty रो गोटे फंडामेंटल कथा मन रखिबो रिस्ट्रिक्शन न रहिले लिबर्टी आसीबो स्वतंत्रता माने कोन स्वतंत्र अर्थात निज द्वारा परिचालित निज द्वारा जे परिचालित हुए सेटा स्वतंत्र बा लिबर्टी को आछे तो लिबर्टी माने सब मन रख absence of restraint माने restrictions तेणु ये तो ओपन ऑप्शन अच्छी absence of restraint ए हम बी हम ऑप्शन absence of restraint लिबर्टी होची absence of restraint इक्वालिटी माने होची absence of special privileges absence of special privileges इक्वालिटी माने कोन कहा पई स्वतंत्र सुविधा न रहिबाटा होची समानता सेंती रेस्ट्रिक्शन न रहिबाटा होची रेस्ट्रेंट बा जो लिबर्टी which of the following are regarded as the main feature of rule of law जो आईन र शासन रो आदर कोन रहउची आईन र शासन रे लिमिटेशन ऑफ पावर्स रहउची जेतु लॉ इज एबव ऑल तेनु सरकार भी लॉ अंडर आछि जो माने क्षमता रे रहउछन तांकर भी लिमिटेशन रहउची से माने लॉ को वायोलेट करिवेनी कारण लॉ को वायोलेट करले रूल ऑफ लॉ केमते आसीबो रूल ऑफ लॉ माने कोन लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट ऑन द स्टेट अथॉरिटीज माने को पावर रेस्ट्रिक्शन रहे तेणु सरकार एमती किसी करिबन जोटा लॉ को वायोलेट करिवो त माने लॉ इज सुप्रीम लॉ इज द किंग इज नॉट द लॉ लेक्स रेक्स नो
बोली एबीडीके कहितला एबीडीके रूल ऑफ लॉ को कहितला ठीक अछि तो इक्वालिटी बिफोर लॉ रे एटा आसीबो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो रूल ऑफ लॉ रो मेन समस्त आईन आगे समान पीपुल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट तार किछि सेंस नै एठी तेनो एटा कटि जिवो आउ लिबर्टी एंड सिविल राइट्स रहिबो जदि रूल ऑफ लॉ रहिला लिबर्टी और सिविल राइट्स रहिबो लोक मानकर समस्तकर जो लीगल राइट्स रहिबो आउ फ्रीडम रहिबो ताले रूल ऑफ लॉ रहिबो तेनो एटा 1 2 4 आंसर हबो सी ठीक है पिलाने तो शेष कर देबो हमें 19 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी पिलाने इटा पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लॉ जो हमर जॉन लॉक करथिला जॉन लॉक बोधे हां जॉन लॉक रो पॉजिटिव लिबर्टी पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी इटा जे वेयर देयर इज लॉ देयर इज लिबर्टी सेटा होची इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी यदि लॉ नहीं लिबर्टी सेटा पॉजिटिव थ्योरी तमन लॉ रहिबा दरकार लिबर्टी अनरिस्ट्रेन्ड होबनी लिबर्टी पई भी लॉ रहिबो त लिबर्टी दे हमर जेमति फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अछि 19 रे 19 रे फ्रीडम अछि 1 रे सब दिया हिची फ्रीडम गुरा सब रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन त माने लिबर्टी without law is meaningless then where there is law there is liberty सेटा होची पॉजिटिव थ्योरी ऑफ लिबर्टी कह जाय जॉन लॉक ताकू करथिले डिस्कवर करथिले बा ताकू प्रोपाउंड करथिले दैट इज ऑल अबाउट ओके प्लाने तो आज बहुत सारा क्वेश्चन देखले ए सब जिंस गुरा टिके यूजफुल जिंस जो मानकर दरकार होची से मान निश्चित ताकू देखिबो ग्रुप रे शेयर करो एवं अन्य मानकू इंस्पायर करो दे शुड वॉच द क्लासेस एंड एनी कमेंट यू कैन गिव अस will respond to the comments ठीक है जहाँ भी तुम्हारे डाउट्स रोची बा जहाँ पर तुम्हें चाहूचो कि आरी ऊपर क्लास आनिला आउ टिके हमको यूजफुल हबो कोनोसी भी डाउट कोनोसी भी रिकमेंडेशंस तुम्हें मेसेज माध्यम रे हमको देई परिबो सो स्टे ट्यून टू ADA 247 OPSC YouTube channel at 5 PM by Polity and English class by SK Raut sir ठीक है जी ओके पिलाने तो for better communication, for better authority, watch, share, comment and subscribe ADA 247 channels. Thank you very much to all of you for today's sessions and wish you all the best for your future endeavor. ठीक है? Any recommendation you can give through the YouTube channel.